Good morning, students. Welcome to your English class. So, today we are going to start with something very creative, and that is paragraph writing. You have done this topic in your fourth class also. So, before starting paragraph writing, you should know what is a paragraph. So, a paragraph is a group of sentences or a short composition related to a topic. Paragraph होता क्या है? It is group of sentences. Means हम कुछ sentences लिखते हैं which are related to some given topic. You are given a topic and you have to write about that. Some sentences you have to write about that, and that is called a paragraph. And one thing more, that in a paragraph we write it in continuity. It is not there that we number the lines. We don't number the lines while writing a paragraph, right? So paragraph that moves in continuity. अगर एक लाइन ख़त्म हुई है, वी आर नॉट गोइंग टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन. नो, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर ओनली. अपनी नोटबुक में जहाँ पे आपका फर्स्ट सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, यू विल पुट फुल स्टॉप एंड कंटिन्यू फ्रॉम देयर. यू विल नॉट शिफ्ट टू नेक्स्ट लाइन ऑफ योर नोटबुक, राइट? सो देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड while writing a paragraph. So the first thing is, the first sentence is usually related to the given topic. आप जब भी paragraph लिखते हो, so the first sentence that is always related. Normally we write it as an introduction to that topic. आपको जो भी topic दिया जाता है, तो first line जो होती है, that is an introduction to that topic. Right? So this is the first point that you need to keep in your mind while writing a paragraph. Second is, the body of the paragraph should explain the topic. Up, that was the beginning. After that you start writing. So body means the content part that you are writing. तो उस content में it should explain the topic. आप जिसके बारे में paragraph लिख रहे हो, that should be explained in the body of that paragraph. Third is, the final sentence must sum up the topic. Final sentence means जो हम last line लिखते हैं, वो हमारी इस तरह से we have to write that it should sum up the topic, कि वो पूरा जो हमने topic लिखा उसको conclude करे. राइट? ये नहीं कि बीच में ही हमने छोड़ दिया, इट इज़ डन. नो. सो द लास्ट लाइन ऑफ योर पैराग्राफ दैट शुड सम अप द टॉपिक, कि लास्ट में आप क्या कहना चाहते हो. इट शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू द टॉपिक, द थिंग्स दैट यू आर एक्सप्लेनिंग इन द बॉडी. तो लास्ट सेंटेंस भी आपके पैराग्राफ का दैट शुड एक्सप्लेन द टॉपिक, दैट शुड कंक्लूड रादर, कि ख़त्म करना चाहिए कि येस, this is the thing, right? Fourth is, there should be continuity in a paragraph. Now here continuity means जब आप एक पैराग्राफ लिखते हो तो आपका एक सेंटेंस के बाद जो सेकेंड सेंटेंस आता है दैट शुड बी इन कंटिन्यूटी. ये नहीं कि फर्स्ट सेंटेंस में आपका आइडिया कुछ और है, सेकेंड में यू आर शिफ्टेड टू दैट थिंग, एंड थर्ड में कुछ और, एंड सडनली यू रियलाइज ओहो आई वॉज सपोज टू राइट दिस लाइन हेयर. नो. So before writing a paragraph, you need to think about it. You need to organize your ideas. Then only continuity will be there in your paragraph writing. Right? Fifth point is, unnecessary repetition of words should be avoided. Sometimes while writing a paragraph, you repeat the same type of sentences. My mother liked it, then my brother came, he also liked it. No. So there should be variation, and for that you can use sentences in passive form also. Last year if you remember, active passive किए थे ना, voice. So some sentences can be used in
passive form, right? So these are the points that you need to keep in your mind while writing a paragraph. Now in your syllabus it is concept of present tense, right? एंड इसके लिए आपने एक कॉम्पोजिशन लिखनी है, दैट इज हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, इट इज हाउ डू you celebrate your birthday. When you read this title, how do you celebrate your birthday, suddenly this thing comes to your mind that you are going to tell that how do you celebrate your birthday every year. Do you means something that you do in your habit, जो हर साल आप करते हो. Now here you have to be very 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 particular. It is not there how did you will not explain your previous birthday. यहाँ पे आपने अपना पिछला बर्थडे एक्सप्लेन नहीं करना, आपने ये एक्सप्लेन करना है कि हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो. नाउ व्हेन समबडी आस्क्स यू हाउ डू यू, कैसे सेलिब्रेट करते हो, तो सडनली एक लिस्ट आपके दिमाग में आ जाती है कि येस मैं हर साल ये करता हूँ, ऐसे अपने फ्रेंड्स को बुलाता हूँ. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू राइट इन दिस पैराग्राफ. एंड फॉर दैट I just tell you that how you need to start your paragraph writing. First is most important thing. This is write in simple present tense. How do you celebrate? तुम कैसे करते हो, ठीक है. तो यहाँ पे you will explain in simple present tense using first form of verb. I think this thing is clear to you all. राइट. सो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करके यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ. नाउ फर्स्ट थिंग इज, एज आई टोल्ड यू, फॉर पैराग्राफ राइटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इंट्रोडक्शन in 2 lines, that the beginning of your paragraph it should tell the introduction. अब बर्थडे से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है? बर्थडे इज़ अ मेमोरेबल डे फॉर एवरीवन. Birthday is the most awaited day in everyone's life. So you know about this thing, okay? So everybody eagerly waits for this day. Then you need to relate this thing. ये आपने इंट्रोडक्शन दे दी, उसके बाद में आपने ये भी बताना ना कि मैं भी वेट करता हूँ हर साल अपने बर्थडे की. Everybody does, okay? So उसके बाद आपने इस लाइन को रिलेट करना है आगे. Then now these are the WH question that you need to use while writing your composition. Like when does your birthday fall? कब आता है आपका बर्थडे? Where do you celebrate it? आप कहाँ इसको सेलिब्रेट करते हो? How do you celebrate it? आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? Different activities or games that you organize on that day. So some people they call some juggler or magician. So different activities जो आप अपने बर्थडे पे करते हो, right? Some people they go to temple. So you need to, everybody celebrates his or her birthday in their own manner. तो आप जैसे सेलिब्रेट करते हो आपने वो बताना है. एंड यू नीड टू टेल अबाउट द होल डे. सुबह उठने से लेके शाम तक जो भी आप अपने बर्थडे पे करते हो, सिंपल, इन सिंपल वे यू हैव टू राइट दोज लाइन्स. यू कैन एक्सप्लेन डेकोरेशन पार्ट, इन्विटेशन, रिटर्न गिफ्ट्स, all those things you can explain. So these are the hints, right? So you can write my birthday falls in the month of that, I don't know, जिसका जब भी बर्थडे होता है तो you can write about it. Every year I celebrate this day at my home with my friends and relatives. So every year, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हो कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो. So there are certain things that you do every year. I know everybody goes to temple, गुरुद्वारा, कहीं ना कहीं जाते हो, family members they also wish you, you are wished in the school also. So these are the things that happen with you every year. This is how you celebrate your birthday. Then cut the cake, invite all my school friends, mother cooks our favorite dishes, decorates my room, play games, dance. ये सारी, these are the hints that you can use while writing your paragraph. Enjoy,
give return gifts, and at the end of the day I feel tired. I go to bed, thank my parents for a grand celebration. So this is how you can write about a paragraph, right? So after listening to this audio, after watching all the hints, you need to do a paragraph, you need to write a paragraph, and that is how do you celebrate your birthday, right? So watch this video again and again so that the things are clear to you, right? So in 100 to 125 words you have to write this paragraph in your notebook, right? So do well, try to write as good as you can. Okay, so thank you, have a nice day.